Hello students, class 12 physics. Chapter is dual nature of matter and radiation. Topic is properties of photons. इस लेक्चर में आज हम फोटोन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. तो नंबर वन इज फोटोन इज नॉट ए material particle. It is a packet of energy. मटेरियल पार्टिकल नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं फोटोन को. नंबर टू, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0. We know that rest mass of the photon is 0. 0 कैसे होता है? We know that m is equal to the mass of any body. M is equal to this m naught upon square root of 1 minus v square upon c square. Here this v is the speed of the body and c is the speed of light. Therefore this m naught rest mass is equal to m into, this is m into square root of 1 minus v square upon c square. But in case of photon, v is equal to c. Photon की जो स्पीड होती है that is equal to speed of light. Therefore this m is equal to, this m naught is equal to m into this square root of 1 minus 1 is equal to 0. Therefore the rest mass of the photon is 0. m naught की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 आती है ना. its effective weight और effective mass के ये effective mass is given by or is given as, we know that according to energy mass equivalence is equal to mc square, or the energy of the photon h nu. Therefore m is equal to h nu upon c square, or this can be written as this h nu upon c into c, or therefore this m is equal to h nu upon c is equal to nu lambda. So this nu cancel by this. Therefore this h upon this is c lambda. So this mass is known as effective mass of the photon, right? And this is also known as, this mass is also known as kinetic mass of the photon, right? Now number three is the photons have momentum. Photons have momentum, and this momentum is given by momentum. फोटोन का मास भी होता है, फोटोन की स्पीड भी, therefore इनका मोमेंटम होगा. एंड यू नो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p. therefore this mass into speed, and you know this p is equal to m की वैल्यू हमारी this h upon c lambda into this c. So therefore on solving this is h upon lambda. This is the momentum, मतलब momentum of the photon. Number four property, all photons emitted from a source of radiation travel through
space with speed of light that is equal to c. Photon emitted from the source of radiation travel through space with the speed of light. फोटोन की स्पीड स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट. नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन does not change. Frequency of photons does not change. Frequency of photon does not change when photon travels through different मीडियम. दैट इज, यदि कोई भी फोटोन हमारा या कई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम 1 टू मीडियम 2 ट्रेवल करती है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन द फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नंबर 6 प्रॉपर्टी इज फोटोन एनर्जी. Photon energy is independent. The photon energy is independent of intensity of radiation. रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, अलग अलग इंटेंसिटी, बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. इट डिपेंड्स ऑन द फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. नंबर 7, द intensity of light beam is directly proportional to number of photons present in it. जितनी ज़्यादा रेडिएशन के अंदर फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम. नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन इट, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन रेडिएशन है अंदर लाइट बीम के अंदर उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम. नंबर 7, दिस नंबर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी किसे कहते हैं? इंटेंसिटी इज द एनर्जी. इंटेंसिटी इज द energy crossing per unit area normally per second is known as the intensity of the intensity or the energy flux. Energy crossing per unit area पर जितनी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम इंसिडेंट होती है या पर यूनिट टाइम क्रॉस करती है यूनिट एरिया से, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मली, तो दिस एनर्जी इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज energy flux. And therefore energy flux or the intensity of light E is equal to how much? This is energy upon area upon time. Energy upon area per unit time, or this energy upon time is power. Therefore this is power upon area. And for a point source
point source of power P at a distance R, at a distance R, intensity is given by this I is equal to power upon area, and for a point source area is 4 pi r square, the surface area of spherical portion. So this indicates that the intensity is proportional to 1 upon r square. So these are the properties of photon. Now numerical, a proton has kinetic energy E is equal to 100 kilo electron volt, which is equal to energy of photon. ये फोटोन है, यहाँ पर प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and this energy is equal to energy of the photon. Let lambda 1 be the de Broglie wavelength of the proton and the lambda 2 be the wavelength of the photon. Then find the ratio of lambda 1 upon lambda 2. So here solution is the de Broglie wavelength of a particle of mass m and kinetic energy capital E is given by we know lambda is equal to h upon p. This h upon p, this is the wavelength, de Broglie wavelength of the proton, right? And p is equal to होता है आपका √2me. Therefore this is h upon p is equal to this is square root of 2m into e. कैसे आता है? This kinetic energy is equal to half m v square, m से multiply m से divide. So this is E is equal to how much? P square upon 2m. Therefore this P is equal to square root of 2me. This is number one equation. Now the wavelength of photon of energy capital E is given by this lambda 2 is equal to this is Sc upon E. क्यों? The energy of the photon is given by h nu, and this E is equal to Sc upon lambda. Therefore lambda is equal to Sc upon E. This is equation number 2. Now on dividing equation 1, this equation 1 by 2, on dividing equation 1 by equation 2, then we have lambda 1 upon lambda 2. Lambda 1 upon lambda 2 is equal to this is h upon square root of 2me into this lambda 2 is this capital E upon Sc. This SH cancel, and this can be written as square root of E into square root of E upon this is 2 root of 2m into E into this C here. So this cancel by this. Therefore this lambda 1 upon lambda 2 is equal to this is 1 upon C square root of this is E upon 2m. This is the ratio lambda 1 upon lambda 2, ratio between the two wavelength lambda 1 and lambda 2. हमें क्वेश्चन में गिवन था here this is
If proton has kinetic energy 100 kilo electron volt and this energy is equal to energy of the photon, and let lambda 1 is the de Broglie wavelength of the proton, lambda 2 is the wavelength of the photon, हमें रेशो फाइंड करनी थी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की। देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए क्या होता है, h/p एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m होता है, इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी E इज गिवन बाय दिस लैम्डा hc/E, दोनों को डिवाइड किया, देन दिस इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन c स्क्वायर रूट ऑफ E अपॉन is this 2m. So this is the wavelength ratio. So this is the answer of this problem. आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।